हाय एंड वेलकम टू द बिल्डमेट पॉडकास्ट। आज मेरे साथ आर्किटेक्ट वरुण टंडन है। ही इज़ अ डियर फ्रेंड एज वेल एंड हिज कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज़ मल्टी फैसेटेड एक्चुअली। कंसल्टिंग के अलावा ये बिल्डिंग खुद भी बनाते हैं, तो इनकी जो नोहा और नॉलेज है आज हमारे बहुत काम आने वाली है। हाय वरुण, गुड टू हैव यू हियर। ऑसम टू हैव यू टुडे विद अस। Would you like to tell us something about your experience? So my name is Varun Tandon, as Rishabh already mentioned, and I'm an architect. I've done my bachelor's from School of Planning and Architecture, Very nice. and I've done my master's in interior designing from Ansel University. Okay. So it's been roughly about 5 years since I've started working. Okay. So I work with a firm name called Fairbuild. Yeah. जिसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसके वीडियोस मैं फॉलो करता हूँ, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट देयर. Is there a core area of expertise that you enjoy in your own field? See, I try to work towards the best in architecture. So the core area that I target is majorly residential, and residential basically and builder floors. That's where I try to target. Okay, that's where you're doing the floors, where you're building and you're selling them off. Yeah. So you're working as a builder and an architect. And right? an architect. Okay, great. वरुण, मैं कई बार ना, जैसे अभी मेरे एक फर्स्ट सीजन में आई मेट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, राइट? तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मैम स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्यों रखूँ मैं? हमारे देश में हम सब खुद ही पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर भी खुद हैं, हमने डॉक्टरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, हम इंजीनियर भी खुद हैं, हमने इंजीनियरिंग की हो या ना की हो, एंड आई थिंक दैट होल्ड्स फॉर योर प्रोफेशन एज वेल, राइट? हम खुद ही आर्किटेक्ट हैं क्योंकि हमने पहले कभी घर बनाया हुआ है. वाई शुड समबडी हायर एन आर्किटेक्ट? With architects, what we do is we foresee what is going to be next. Like, I'll just give you a very small example on this. हमारे एक पहले किसी रिलेटिव का ही somebody was building their home, and उनके AC वाले they got stuck on one thing कि slab से we'll cut the slab and we'll let the pipe pass through a sleeve. Oh. ठीक है. अब they didn't have an architect then. They're like, ठीक है, he has more experience with working with AC pipes, so we'll do it. Yeah. And then आज तक, मतलब it's been 10-12 years when I became an architect. जब मैंने आर्किटेक्चर करनी शुरू करी थी, वो तब से मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि वरुण ये सीपेज कैसे रू, रोज़ बारिश का पानी आता है. So there are really small things that an architect can foresee. Yeah. That an owner can't. Somebody who doesn't have the experience. This is a very small example. Yeah. That I gave. What are the services that fall under the purview of an architect? Okay, if you're going for architecture consultancy, Yes. Hardcore consultancy, the structure consultancy is also included in our scope only. So we are the ones communicating with the structure consultant and preparing the drawings. Okay. And after that, the working drawings, electrical drawings, plumbing drawings. If I go deeper into architecture, then there's elevation kit designs, what we can try out, and probably licensing of the plans, getting the licenses and everything. That is our scope. Okay. And if we move towards interior design, then obviously interior working drawings as well. Okay. And that brings me to the next question. What are the types of drawings that an architect provides in the entire plan of the house? Types of drawings, it's majorly working drawings only. So starting from slab electricals, the plumbing, where each and every pipe has to go, from rainwater pipes to supply pipes to waste pipes. Waste pipes kitni moti honi chahiye, how much load that bathroom is taking. If you notice all the commercial projects actually they actually have calculations and deep calculations that you have to calculate the footfall of the area. Then according to that, you have to calculate how many urinals you're going to give in the toilet. Wow. Yeah. So there are really small nitty-gritty details also. Talking about drawings, again, electrical, plumbing, structure drawings goes through us. Then the floor plans, how the spatial planning should be done, window details, door details, elevation details. These are a few number of drawings that we usually. Okay. अगर किसी को फर्ज करिए कि कोई 2 या 3 डिफरेंट आर्किटेक्ट से मिलता है, all through referrals, right? How does one decide that who is the right fit for their home or their building need? How to choose, who's the right architect for their home? See, our profession is all about referrals only. Our business all about referrals only.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेफरेंस, अगर है रेफरेंस तो इट्स बेटर टू गो टू दैट पर्सन फर्स्ट. Because you're not allowed to do marketing, right? Yeah, marketing, endorsements, all such things doesn't, our ethics don't allow it. Professional So code of ethics. if you actually do that, COA has the right to cancel a license. Oh. So if you notice, my Instagram page is not about endorsements or not about promoting a certain product or promoting my design. It's about information. Yeah. That's knowledge sharing. Yeah. So after reference, probably you should notice what their designs are. All the three architects, Okay. keep their designs together, roam around their projects once and see if you like the look and feel of that project, if you like roaming around their project. See, that is it. And on the basis of that, you have to take a call whether you want to hire that architect or not. Do you think it is beneficial for me to go with somebody who has a team of vendors with them? Do you think I need to look at the number of years of experience? आज की डेट में मायने रखता है, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ज़्यादातर मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं. तो हो सकता है जो जिनका 40 साल पुराना भी एक्सपीरियंस हो, वो उस मॉडर्न आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आज वो थिंकिंग ना फिट हो रही हो. मे बी, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ रैंडम. There are vendors available in the market जिनके पास ओनर भी डायरेक्टली जा सकता है, आर्किटेक्ट के थ्रू भी जा सकता है. बट इट्स बेटर टू गो थ्रू एन आर्किटेक्ट बिकॉज vendors, you don't know when they ditch on you. Yeah. If an architect is there, he knows what to put in that contract. He knows किस स्टेज पे कौन सी पेमेंट होना जरूरी है. राइट. कि वेंडर भी ना उदास हो एंड क्लाइंट इज ऑल्सो हैप्पी. सी, एंड ऑफ द डे, वेंडर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, स्ट्रक्चर डिजाइनर्स, एवरीबडी, वी बिल्ड द स्ट्रक्चर एंड वी गिव इट टू देम. उसको घर तो वो यूजर ही बनाएगा ना. I know what you mean. I know what you mean. Very nice. Can you guide us through the process of building कि कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ तक हम जाते हैं, और once you do that, इसका जो additional मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आर्किटेक्ट की हैंड होल्डिंग पीरियड क्या होता है? मतलब आपका रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, when does it start, and in your purview of the job या construction stage, where does it end? See, we try to stick as long as possible with the client. ऐसा नहीं है कि अगर client decisions में slow है या कुछ है तो we don't leave their hand until they are finished. Okay. Roughly, tentatively, एक project 2.5 से 3 साल maximum ले जाता है to the max. Okay. कभी I'm talking about residential project, commercial projects take even more time. But एक वो होता है कि आपने owner के साथ एक साथ निभाना है. This journey that he has started, you have to be with them during this journey. So one of my mentors, so he told me once कि अगर वो साथ आपने एक बार निभा लिया ना तो आप उनके फैमिली आर्किटेक्ट बन गए. They kind of become like family, क्योंकि वो काफ़ी लंबी हैंड होल्डिंग होती है और एक लंबा टाइम मिलता है रिलेशनशिप. एंड इनिशियली जब आप डिज़ाइन प्रोसेस में होते हो, आप उनकी पूरी फैमिली से मिलते हो, फिर उनसे बात करते हो. राइट. यू काइंड ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली. राइट. एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव विद आवर ट्रेनिंग. राइट. कि वी गिव द बेस्ट पॉसिबल थिंग दे वांट. मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हेन ही वाज बिल्डिंग हिज होम. हम बात कर रहे थे कि यार अपनी 8 बेडरूम का घर क्यों बनाया है, घर में आपके मेंबर तो 4 हैं. यू नो, ही केम आउट विद अ टर्म, ही सेड यार फोमो होता है. कहता यार ये लगता है उस टाइम पर कि कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए कि यार ये ना रह जाए या वो ना रह जाए, यू नो. तो आई एम क्रिएटिंग 2 गेस्ट बेडरूम्स, आई एम क्रिएटिंग अ टीवी रूम, आई एम क्रिएटिंग अ आई डोंट नो एक्टिविटी रूम, एंड यू नो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द किड्स कि कल भविष्य इनका है, ये दोबारा घर बनाएंगे नहीं बनाएंगे मुझे नहीं पता. दैट इज वेयर द आर्किटेक्ट कम्स इन एंड ही ट्राइज टू कंट्रोल दैट फोमो कि नहीं, आपको आगे इन द नेक्स्ट मेरे ख्याल 15 to 20 years you won't require. My house, it was built when I probably started my architecture. So it was built by my mentor. Yeah. तो he built the house in such a way कि मेरे को आज तक भी उस घर में कोई कमी महसूस नहीं होती. That's like my ideal project. Yeah. Which I foresee while designing. Vastu, pro or against? Very sensitive topic. If my mother, Controversial maybe. If my mother is seeing this podcast, then I have to say pro. Okay. What do you think? But there's a thin line. There's a thin line. Yeah, you have to at times follow Vastu also. एक वो मन का वहम दूर करने के लिए I try to maintain Vastu in my plans as much as possible. But as per the client's need या नहीं, खुद भी एक अगर कहीं कुछ क्लैश आ रहा है कि कुछ इशू आ रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या यहाँ से पाइप ये नहीं जा सकती, वट एवर आई डू, बट वो वास्तु को हिंडर कर रही है, देन आई ट्राई टू बैलेंस थिंग्स आउट. या
consult a few vastu consultants So and get practicality something. over vastu sometimes. Sometimes. Okay. Sometimes. Okay. And but we would rather make it all vastu proof for your client so that Yeah. उनको satisfaction रहे. वो satisfaction है. कल को कोई उठ के भी उनको वास्तु आके बोल दे तो वो ये ना रिग्रेट करें कि हाँ जी मैंने 2 साल पहले मेरे को वास्तु का शौक नहीं था, आज है. But you must have done homes for people who don't care much about vastu and they're happy in their house as well. होते हैं, but I tend to keep that thing in mind. Oh, okay. The basic core हाँ, the values basic of the core. कि कोई आगे रैंडमली ये ना बोल दे जी आपने नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम क्यों बना दिया जी, ये तो कौन था आपका आर्किटेक्ट, गलत था, ये था. Right, I know what you mean. In fact, किसी का कहा हुआ ज़्यादा बुरा लगता है बाद में. हाँ. That's there. There is a whole push from the government today about getting into basically bringing down the cost of housing. अब बहुत सालों से चलता आ रहा है और जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इस तरीके के कई सारे नारे आए हैं पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में. They've been trying to bring a constructed home to all individuals in India, right? क्योंकि हमारे यहाँ वही core values हैं, रोटी कपड़ा मकान, right? और मकान सबको चाहिए और गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन रहती है. Now, how does one actually in today's environment जहाँ सब चीज़ इतना inflated है, especially raw material, how does one bring down their cost of housing today? See, this has been going for ages now. The late Mr. B.V. Doshi, he also did that Aranya low cost housing. मतलब there are a lot of housings जो कि low cost के terms पे शुरू करी गई थी starting में. बनी भी, a few of them were successful, a few of them weren't. आज की डेट में if you talk about bringing down the cost of construction, then I think you should go back to the time जब independence हुआ था and then the government didn't have money. Yeah. So they came up with different things. They started innovating, like IPC flooring. It's Indian painted cement flooring. So that flooring was basically cement, a layer of cement on the floor. उसमें लोगों ने upgrade करा by adding marble chips to it. Okay. If you still go to old independence era की buildings, आज भी जो government buildings हैं, you'll find that IPC flooring there. हाँ. And that is very long lasting. आज के टाइम में तो टाइल, मार्बल सब चीजें आ गई हैं. Yeah. These are the things that brings down the costing, not compromising on the structure at all. Initially पहले जब buildings बन रही थी तो everything was done on site, right? Casting भी साइट पे हो रही है कंक्रीट की, वार्डरोब्स भी वहीं बन रही हैं, फर्नीचर भी वहीं बन रहा है, टाइल पत्थर सब चीज़ वहाँ लग रहा है, किचन भी वहीं बन रही है, बाथरूम्स के सारी सैनिटरी वेयर वहीं फिट हो रहा है. एवरीथिंग इज नथिंग वाज आज के डेट में सब मॉड्यूलर है, खिड़की दरवाजे भी वहीं बन रहे हैं. नाउ थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री एंड ब्रॉट टू द साइट एंड इंस्टॉल्ड. एंड maybe it is inflation over the time, but do you think if we actually fall back to the same methods, कॉस्ट शायद कम होगी या बढ़ जाएगी या हैसल बढ़ेगा? What do you think? जितना we term that पुरानी construction, we term that as vernacular. Okay. Vernacular construction is basically using the raw materials that is around you. Okay. जैसे if I go to an old village or some place, वहाँ पे आज भी mud फस्का से चीज़ें हो रही हैं, and वहाँ की type of construction is very different from what is happening here. If we bring that vernacular touch, आज भी आप अगर वो गांव की झुग्गी में वो mud plastered walls में आप अगर अब you don't require an AC, you don't require a fan. हाँ, ठंडे फ्लोर होते हैं, ठंडी दीवारें होती हैं. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स लाई उसी तरीके से गए थे, एंड आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स शुड बी ब्रॉट टू बिगर सिटीज नाउ. दैट विल वी शुड लर्न फ्रॉम दीज एक्चुअली. अभी तो फैशन का जमाना है यार, हमें तो सबको इटालियन फ्लोरिंग चाहिए, सबको बस वही एक है, बट सबको कॉस्ट भी कम चाहिए. राइट. Modern housing versus old houses, like we were just discussing. I've seen that there is a lot more systems required to support a modern house compared to an old house. Do you think it's the house or do you think it's the people in it? क्योंकि शायद पहले इतनी चीज़ें चाहिए नहीं होती थी और अब सारी सुविधाएं, सारे सुख वहीं चाहिए. अभी हमें जिम भी चाहिए, हमें एक स्विमिंग पूल भी चाहिए, अगर फार्म हाउस बना रहे हैं तो हमें एक स्पा भी चाहिए, उसके अंदर हमारे को एक बिलियर्ड्स रूम भी चाहिए, हमारे को एक 2 ड्राइंग रूम्स चाहिए. आई डोंट नो. सो डू यू थिंक इफ द रिक्वायरमेंट हैज गॉन अप और डू यू थिंक वही बात आ गई ना, आपने जो फोमो वाली बात की थी, दैट एवरीबॉडी इज लाइक घर तो जिंदगी में एक ही बार बनाते हैं, तो इसमें सब लगा लूँगा. सो दैट इज वेयर पीपल ट्राई टू मूव आउट ऑफ देयर एरिया कि हाँ जी हम ऑटोमेशन भी करा लेते हैं, हाँ जी हम we get the best of things for ourselves. कि अभी हो रहा है तो अभी हो जाएगा, बाद में फिर शायद रह जाएगा. Again coming to the role of the architect, that is where the architect has to tell them कि जी ये reality check यार कि ये आपकी पॉकेट
आप जो बजट लेके चले थे ये उसमें सूट करेगा नहीं करेगा, आई एम गिविंग यू प्री वार्निंग. Yeah, and how useful it is to you and your Because family. see, honestly speaking, vendors, they have to sell their material. Yeah, उनके भी टारगेट्स हैं, उनको भी मीट करने हैं. correct. तो वो तो क्लाइंट को अपनी तारीफ ही करेंगे ना. Yeah. They will never tell them the downsides or anything like that. बस एक वो स्टीम और सोना लगाना है घर में, आप यूज साल में 10 बार कर रहे हो, है नहीं, एंड बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, whatever XYZ reasons. Maintenance is also there, bunch of things. आप जितने systems लगाएंगे सब maintain करना पड़ेगा. That's there, of course. एक बहुत बड़ा challenge I've noticed. In fact, we were talking and he said, yeah, dust बड़ी problem है. It eats into the hardware, it eats into the electronics, it eats into a lot of systems, and India has a lot of dust. तो आप जो भी modern system बाहर से import करके लेके आ रहे हो, you need to see the practicality of that system working into our environment. We are moving towards a carbon neutral scenario across the globe. In fact, there is a push from the Indian government also that, by a certain amount of years, we have to reduce carbon emissions. You're looking at green buildings, conceptually at least. बात हो रही है, तो मैंने कई बार ये भी नोटिस किया है, वो ग्रीन बिल्डिंग्स के रिलेशन में वो सामने फिसाड में ग्रीन वॉल खड़ी हो जाती है. आई डोंट नो इफ दैट इज द जिस्ट ऑफ इट और मे बी देव डन समथिंग फॉर इट. Everybody has their own take on it. With green buildings, the process starts right from the construction bit. जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, when I just started reading the green building वाला concept, तो उसमें एक पहला पॉइंट लिखा था कि जब ट्रक आपकी साइड पे आ रहे हैं, so at the entry you should have 2 puddles filled with water. So once the truck leaves, तो उसकी व्हील पे भी मिट्टी ना लगी हो. That is where the green architecture element starts from. कि मतलब उतनी भी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप ग्रीन आर्किटेक्चर की तरफ यू फोकसिंग. या बिल्डिंग में देखिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वन कैन फोकस ऑन. आजकल एयर कंडीशन सिस्टम्स VRV कहते हैं कि दे आर एनर्जी एफिशिएंट एंड ऑल इन दैट. इफ़ यू पुट सोलर प्लांट्स एंड ग्रिड पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं सारी इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर ऑल बेल्स एंड whistles that you can find. But obviously green architecture, such things come with a cost as well. Since this is a more, at least from my end, it's a very material centric podcast that I'm doing. तो जैसे मैंने सीजन 1 में सिर्फ स्टील की बात की थी, तो मैं I want to come back to that and I want to ask you how basically do you decide on a BOQ of materials? How do you basically come about कि कौन सा स्टील, कैसा सीमेंट, कंक्रीट का ग्रेड, XYZ and building on? How do you come about? See, BOQ, the full term as you know is bill of quantities. उसमें you have to add everything. मतलब जैसे what I do with my turnkey projects when I make a BOQ or with consultancy when I give it to the client, there are a lot of things that one has to look at. The brand, the grade that you mentioned, and all these grades, they are a basic norm that you have to follow. Like in today's day when I talk to my structure consultant, so there is a certain kg of steel you have to put per square feet for the structure to sustain. Okay. And over that is your wish if you want to make a better structure for yourself. But below that is a risky situation. So एक उस दायरे में मेंटेन करके आपको बताना पड़ता है कि हाँ जी स्टील FE500 और FE550D, which one we want to use, cement OPC or PPC, 43 grade or 53 grade. Yeah. There are a lot of things. A bill of quantities में these things have to be clearly mentioned. Starting from which cement we are using, the company name, the brand name. आप अगर suppose एक wall कर रहे हैं तो उस पर अगर आप पैनल लगा रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट क्या है, सबकी क्या है. People often tend to forget certain really small costs. Freight charges भूल गए डालना. आपने टाइल लगा दी and you're working on the wall, उसको कवर करने के लिए आपको एक शीट चाहिए जिसकी कॉस्ट ऐड नहीं होती, वो कॉस्ट आपने ऐड नहीं करी. एग्जिस्टिंग चीज़ें ऑलरेडी क्लाइंट की बनी हुई है, जैसे बाथरूम में उनका पूरा बाथरूम हो रखा है एंड आपको बाहर का रूम करने उन्होंने दे दिया, तो आपको उसको कवर करने का भी उसको भी भूल मत जाइए. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द हाउस दैट यू हैव टू. उसमें कुछ खराबी होगी तो आप पे ही आएगा वो. इसीलिए आई हैव ऑफन हर्ड कि आप अगर 100 रुपये की बजटिंग कर रहे हो तो आप ये सोचो आपके 125 रुपये लगने हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि आपने बजटिंग उतनी टाइट नहीं करी है. वो जो सुपरवाइजर कॉस्ट हैं, ये सब चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड. बट डू यू थिंक यू कैन एक्चुअली टाइटली बजट योर BOQ एट द वेरी बिगिनिंग, कि अच्छे से टाइटली बजटिंग किया, ठीक है, इन्फ्लेशन कॉस्ट असाइड, कि आप वाइल द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इज गोइंग ऑन कुछ चीज़ें इन्फ्लेट हो जाएं, चेंज हो जाएं प्राइसेस, ठीक है, प्लस माइनस चलता है. बट डू यू थिंक इफ यू बजट इट प्रॉपरली एट द वेरी बिगिनिंग दैट विल मेक अ डिफरेंस विद समबडी?
in terms of bringing the cost down? All architects try and do that, but if the owner wants to switch to a higher grade pathar ya kuch, then Switching is different, yeah. yeah, that is a different thing altogether. But yes, there is a 10 to 20% margin जो कि usually hit कर जाता है. Okay. So that is where if you talk about turnkey projects, there are certain clients who come in and they're like कि हमें इतने में ही काम कराना है. Okay. And if we give them a BOQ or a budget on the basis or a contract basically on the basis of that, then usme ab they want everything, but at the same time they don't want to spend. So I think what we came up with a solution for that was that we work on percentage basis there. That we'll help you with everything. You give us whatever 10%, whatever we discuss on, you give us that per bill. So there is a solution to everything. Okay. In terms of that. What about the myth which says, hiring an architect is very costly? Do you agree with that? Now, I know you're an architect, आप agree नहीं करोगे, but ये सुनने वाला भी ये कहेगा कि यार ये तो architect है, ये क्यों agree करेंगे? But do you agree with this? वो बात कहते हैं ना कि अगर आपने architect हायर नहीं, जितना आप लॉस बिल्डिंग में वैसे सफर कर लोगे ना, उतने architect उसका हाफ होगी architect की फीस. So the cost of not hiring an architect is probably more than higher cost than of hiring an architect. Okay, agreed. So real estate market, future 2023, bullish? Stable. That sounds like a very honest answer. Real estate as an investment, not 2003, long term? Real estate has always been good for long term. It has always been good. मतलब लोग अपने दादाजी की खरीदे हुए प्लॉट्स आज भी इंजॉय करते हैं. That's true. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम छोड़ जाते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशंस के लिए, राइट? That is something वो चलता ही आगे. Very nice. Very, very nice. Boss, it was wonderful to actually have a sit down with you and talk to you. Thank you for coming around. Thank you for having me. I will keep on bugging you. By the way, this is not done. मैं आपको अब हम आपकी कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेंगे थोड़ा सा आने वाले समय में, जहाँ हम सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाएंगे, एक टॉपिक वाइज चीज़ उठाएंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से जस्ट स्टोन लेइंग या फसाड्स में स्टोन लेइंग कैसे होनी चाहिए, या एक बहुत नीश टॉपिक उठाएंगे जहाँ हम आपका थोड़ा सा इनपुट्स लेंगे और आपको थोड़ा सा दोबारा परेशान करेंगे, so that we can share that technical knowledge out there and we can actually bust those myths and we can help people understand things better. पत्थर लगता है तो लकीर कैसे अवॉइड करें, प्लम्बिंग कैसे इफेक्टिव बनाए ताकि घर में सीलन ना आए, बेसिक चीज़ें जो अवॉइड हो जाती हैं. गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस विल बी टॉकिंग टू यू. एग्जैक्टली. इनके आंसर भी बहुत बेसिक से ही हैं. मतलब देयर इज नॉट मतलब किसी को लग रहा होगा कि यार मैंने घर अच्छा नहीं बनाया, बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होगा प्रॉब्ली इसके पीछे. देयर आर वेरी बेसिक आंसर्स टू दीस, एंड विद दोस बेसिक थिंग्स पीपल कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ. ओह वेरी गुड. तो ठीक है, फिर तो डन हो गया. अब आपका मेरा नेक्स्ट सेशन वील शेड्यूल इट सून. And thank you for coming. Thank you for your time. Thank you for having me. Awesome, man. Awesome.